हेमंत, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पर। और इंडिसेस बिल्कुल फ्लैट है, निफ्टी बैंक हल्का सा बैकफुट पे है, 84 अंक नीचे। अभी कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी आपके जहन में आती है या फिर मिड कैप में जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो, ऐसा कोई डेरिवेटिव काउंटर जिसको आप चेज कर रहे हो, क्लाइंट से भी शेयर किया हो? देखिए, पहले मैं मिड कैप्स में एक दो स्टॉक्स ज़रूर बात करना चाहूँगा वीरेंद्र, स्पेशली स्टॉक्स लाइक JSW एनर्जी। अगर आप देखें तो 4 दिन से स्टॉक में लगातार एक्यूमुलेशन हो रहा है ओपन इंटरेस्ट में, और 68 और 70 पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ही टारगेट 78 79। जी चलिए हेमंत, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, हैव अ नाइस डे। कुणाल बोथरा इस बीच हमारे साथ हैं। कुणाल, सॉरी फॉर कीपिंग यू ऑन होल्ड। क्या सलाह देंगे आप? बिकॉज एक तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स इन लेवल्स के आसपास एटलीस्ट कोई बहुत बड़ा डायरेक्शनल मूव इंट्राडे आज देने के मूड में है नहीं। दूसरा ये 8300 था रेडार पे, पता नहीं आज होगा नहीं होगा, लेकिन 8290 तक तो ऑलमोस्ट गया था निफ्टी। आपका व्यू क्या है? जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये कंसोलिडेशन है लास्ट 7 या 8 दिन से जो चल रहा है निफ्टी में, rather than focusing on the index per se, because I think the last 15 days has been extremely good. मतलब 15 दिन में market 7700 से 8300 आ चुका है. You can't ask for more or repetition of what would probably happen in the next 7 days or 10 days. So I think it's a good consolidation. ऐसा लग रहा है कि rather than focusing on the index, I think picking on right set of stocks would be a good strategy. A lot of mid cap names, काफी सारे mid caps और large caps है जो अभी भी बहुत attractive लग रहे हैं, chart wise, technical wise swing breakout दे चुके हैं. So I think that will be the focus for the markets going ahead. Andrew, if you are comfortable enough to talk about some stocks in the mid cap space, would you like to share some investment ideas especially in the dedicated mid cap space? I mean, the stocks which are looking attractive especially after Q4 numbers. So, on the mid-cap space, we've really actually in the past 2 months been concentrating more on the large caps, and I think that's where we'll keep ourselves for the time being. With the mid-caps, I think that the problem we see is that whilst I'm not overly cautious, is that any correction will probably see the mid-caps being hurt a little bit more, because again, some of them have run up quite a lot over the past few months. So I'm sticking more to the large caps than mid caps at the moment. All right, Andrew, you heard RBI governor also yesterday. Chances are that he will get a second term, and that trigger is going to play out in maybe next 1 or 2 months, because I think by mid-August at least we'll have some clarity about his second tenure if he gets an extension. Is that priced in right now? Well, let me put it this way, slightly differently. If he wasn't to get that second term, would markets fall? And I don't think so. I mean, I think we're putting too much emphasis on this. I don't think I remember a RBI governor which is anyone hasn't said has been a world-class governor. So I'm less worried about that. I think foreign investors will be less worried about that. The only positive about Rajan staying is apart from many, but is just a continuity, and I think that's what we'd all like if that's possible. But if not, I'm not worried that the next RBI governor coming in is going to change anything. I think that the RBI is on a path. They will continue to roll out their policies and keep things going. So I don't think it's really a market moving event, to be honest. Andrew, I would like to talk about L&T as well, and L&T in isolation and capital goods in isolation. Exactly, what's your take on capital goods, and especially considering the fact that from the period of February to June, we have seen a substantial jump in L&T. Are you finding interest in L&T at the price of 1500 right now? No, it's one that we kind of liked, but obviously within the whole sector, it's all about execution. It got beaten down quite a lot
because of worries about the Middle East and oil prices. And I think that's partly recovered, in terms of where you've seen the share price move recently. I think to continue that momentum, you'd have to have one or two things happening, and one is obviously that as we said before, the monsoons being okay, and that will give the leg up to the economy that we need, and I think that will be the driver for L&T going forward. Would I be chasing it right now? Not really. The valuations were compelling a few months back, and that's when we were buying. But I think at the moment I wouldn't be chasing. राइट कुणाल, आज एडीएजी ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स पर काफ़ी अच्छा मूव है, सो बी इट रिलायंस इंफ्रा, आरकॉम, रिलायंस डिफेंस इज ऑब्वियसली लीडिंग. इंट्राडे आप इसमें कोई पिक देना चाहेंगे क्या? मेरे अनुमान से आई थिंक जो स्ट्रक्चर है जो रिलायंस इंफ्रा का मुझे बहुत पसंद है. आई थिंक स्टॉक जिसने स्टार्ट ऑफ 2016 से जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड दिखाया था, एक कंसोलिडेशन में है. शॉर्ट टर्म चार्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक 520 530 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है रिलायंस इंफ्रा के लिए. तो वी हैव ऑलरेडी issued a buy call to our clients today morning. I still believe that even at 542 Reliance Infra is a good buy from a trading perspective. I would look at at least 560 as a potential target for the stock. Stop loss, as I said, could be in the range of 525 to 530. Andrew, since we have left the earnings season behind, now was there any surprise sector for you in this earnings where you were expecting maybe not so good numbers, but they surprised you on the higher side and those early green shoots were visible? I think the surprise package, I suppose, was really the metals sector, which against all the odds actually did quite well. So that was the surprise factor for us. But I think overall the earnings season, notwithstanding the banks and the problems there, was actually better than I think anyone's expectations. And I've said before that as capacity utilization kind of slowly creeps up, that's operational gearing, and basically all of that falls through to the bottom line. So that's the good news, is that margin improvement is from increased capacity utilization. So if that momentum continues and it goes through into the second half of the year, then the earnings growth will be a lot higher than we're expecting. We're expecting around 10% earnings growth, so I will be expecting upgrades from my forecasts, but that all depends now on the monsoons, unfortunately. All right, Andrew, thanks for joining us. शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, एंड प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो. सो जो Q4 नंबर्स थे, उसके बाद मेटल्स पर ऑब्वियसली एंड्रू ज़्यादा बुलिश हैं, वहाँ पर सरप्राइज मूव उन्हें देखने को मिला है, एटलीस्ट फंडामेंटली. आपकी कोई पिक है क्या कुणाल मेटल स्टॉक्स में इस समय फ्रॉम शॉर्ट टर्म व्यू? आज टाटा स्टील पर फिर से 1% का मूव है, टाटा मेटालिक्स पर हमने देखा अच्छा मूव है. आई थिंक ये टाटा स्टील काफी स्ट्रांग है. आई थिंक शॉर्ट टर्म चार्ट में भी आरएसआई एंड एमएसीडी का जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक डिसेंट ब्रेकआउट दिया है कल और आज के ट्रेडिंग सेशन में. मेरे अनुमान से आई थिंक 358 359 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं इसमें 1 या 2 डेज के ट्रेडिंग के नजरिए से. स्टॉप लॉस इसमें रखूंगा मैं यस्टरडेज लो व्हिच इज क्लोजर टू 336. एक चीज़ और है, थोड़ा सा निफ्टी बैंक पे फोकस करना चाहूँगा, चलते चलते बस एक इंडेक्स पे लौटना चाहूँगा. निफ्टी बैंक पे क्लाइंट्स को क्या अप्रोच दी है आपने? 17,868 अभी बड़े क्रिटिकल फेज से, 17,700 से 17,650 से लगभग 100-150 अंक दूर है. ये क्या अप्रोच लेके चल रहे हैं निफ्टी बैंक पर आप? जी, आई थिंक एक सिमिलर अप्रोच है जो निफ्टी में हम रख रहे हैं कि बिकॉज अगर हम देखें इंटरनल्स देखें, इट्स नॉट जस्ट द बैंक निफ्टी लेवल्स, बट अगर हम इंटरनल्स को गौर से देखें तो काफी सारे प्राइवेट सेक्टर नेम्स है जिनमें हमने प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन देख रहे हैं. येस बैंक हो, कोटक बैंक हो, एक्सेट्रा. आई थिंक उनमें कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन आ रहा है. तो बैंक निफ्टी भी 18,000 साइकोलॉजिकल मार्क के आसपास स्ट्रगल कर रहा है. आई थिंक इट्स अ गुड कंसोलिडेशन. अगर 2 या 3 दिन पे करेक्शन भी आ जाता है 100-200 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में, आई थिंक इट कुड बी अ डिसेंट करेक्शन. In terms of levels, I think 18,000 remains to be a resistance. But if Bank Nifty drops by 200 points, I think that would be a good trading opportunity to go long. बिल्कुल. रियल एस्टेट में आपकी टॉपिक क्या है कुणाल इस समय?
आई थिंक रियल एस्टेट में अगर हम ट्रेडिंग वाइज देखें जो स्टॉक ब्रेकआउट के कगार पे है, आई थिंक डीएलएफ स्टैंड्स आउट प्रीटी वेल। आई थिंक स्टॉक 135 136 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग चार्ट्स वॉल्यूम वाइज एज वेल एज प्राइस एक्शन। गुड पार्ट इज दैट जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेजेस है, मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस है, उनके स्लोप इंक्रीज हो रहे हैं। तो डीएलएफ इज वन स्टॉक व्हिच आई एम लुकिंग एट। 143 इज माय टारगेट एंड 130 एज द स्टॉप लॉस।